सो मुझे कोई बताए कि व्हाट इज वर्नियर कैलिपर्स। आई गेस यू वुड हैव डन दिस सिंस यू आर गेटिंग ग्रेड 11। आप 10 के अंदर ही पढ़ के आ चुके होगे। जस्ट गिव मी अ ब्रीफ समरी अबाउट वर्नियर कैलिपर्स एंड इसकी नीड्स भी पड़ती है, राइट? व्हाई कैन वी यूज ओनली जस्ट अ हाफ मीटर रूल और मीटर रूल टू द रीडिंग? व्हाई डू वी नीड वर्नियर कैलिपर्स? चलें, जो पार्टिसिपेट करेगा आई एम गोना गिव यू अ बोनस ऑफ +1 व्हिच वुड बी एडेड इन योर टेस्ट 1। ठीक है, जब आपका टेस्ट भी होगा आफ्टर 2 चैप्टर्स। ठीक है, सो बोनस ऑफ +1 जो भी बंदा होगा would get। ठीक है, सो it will be added into test करना। यस, कौन बताएगा? कौन निकलेगा? जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन। रेज योर हैंड इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट। बोनस की बात आ रही है मेरी की दूसरी क्लास में तो लड़ाई हो जाती है कि मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। एनीवन गैस करो, तुक्का मार दो। इट वुड वर्क। इट डजंट नीड टू बी एग्जैक्टली करेक्ट। Sir, I have never read this, but पिक्चर को देखते हुए मैं ये बता सकती हूँ कि स्केल पे तो एक स्पेसिफिक हम ले सकते हैं लेंथ, अगर उससे छोटी लेंथ लेने के लिए then we use vernier calipers. कैन यू स्पीक लाउडली थोड़ा मशा? Can you hear me now? ये आई कैन हियर नाउ। तो सर मेरा ख्याल है कि स्केल पे तो हम एक स्पेसिफिक रीडिंग्स ले सकते हैं, तो अगर उससे छोटी रीडिंग्स लेनी होगी तो उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर्स यूज करेंगे, परफेक्ट। जैसे कि 0.5 मिलीमीटर, इससे ओके, वर्नियर कैलिपर्स। गुड गुड। ठीक है, सो या तो चलें, मशाल गेट्स सम बोनस ऑफ 1। अच्छा, यू शुड रिमाइंड मी आफ्टर योर टेस्ट के साथ आपने जो बोनस दिए थे। आई वुड आस्क द टीए टू ऐड द मार्क्स, राइट? और आपका टीए चेकिंग करेगा बैठ के। So I would ask TA to basically add on mark in your test. ठीक है, so yeah, that is correct. So let's say आपकी जो स्केल की जो रीडिंग होती है, हाफ मीटर रूल, ठीक है। So let's say this is 1 2 3 centimeters and then we have division over here 1 2 3 5 1 2 3 6। ठीक है, so इसके लीस्ट काउंट इज बेसिकली 0.1 सेंटीमीटर। So इसकी एक्यूरेसी इज ऑल्सो बेसिकली व्हाट? 0.1 centimeter, right? उससे smaller reading it cannot give you. Let's, as basically Mashal said, कि let's say if you want to measure the let's say आपके पास एक ball है, it's a steel ball over here, and इसका diameter let's say is 0.25 millimeter, right? And if you want to take this reading, let's say if you want to take readings lesser than let's say 0.1 centimeter, you would have to use different instrument, right? So for that, for readings basically, for the accuracy of, if you want the accuracy of 0.1 millimeter, right? So you will use what? We use Vernier scale, right? Vernier calipers. ठीक है, because उसका लीज काउंट इज 0.1 मिलीमीटर ओवर हियर, so we use Vernier scale, right? अब इसके कुछ कंस्ट्रक्शन पार्ट्स हैं which you should be known to. So let me just insert empty slide to discuss इसके constructing parts which it contains. ठीक है, आपको नाम याद होना चाहिए because that can come in your exam. कि label and explain the parts of a Vernier calipers. If I can take the picture from here, just to basically annotate the next slide. Simple annotation. Yes. So it contains two type of jaws, right? So these are called internal jaws, right? These are called internal jaws, and these are called external jaws, right? External jaws. Okay. And this is called a ratchet over here. You can call it a screw. Yes, this is used to basically fix your Vernier scale. This is your Vernier scale. You can make notes if you want to. This is called a Vernier scale, right? And this is called a main scale, right? You can move the Vernier scale if you can lose the switch, or you can lose the ratchet. You can move the Vernier scale up and down depending upon क्या आपका, let's say if you want to measure the size of this key, you can move, you can extend or close down the Vernier scale. ठीक है, main scale is fixed.
So these are the construction parts for the Vernier calipers. So let's do some description for these parts. Okay, every part क्या क्या show कर रहा होता है बैठ के, ठीक है. So we have external jaws which are at the bottom, at the top of the instrument, ठीक है. So ये क्यों इस्तेमाल होते हैं? Let me just write it down over here. The external jaws are basically used for, these are used for measuring internal diameter, internal diameter of hollow spheres. ठीक है. What do I mean by that? Let me just see. Let's say you have a tennis ball, right? You have a tennis ball, like, let me just choose a green color. You have a tennis ball, right? आपने उसको 20 से ना काट दिया. Let's say using the cutter or any knife, and you have sort of this semicircle, right? ये थोड़ा गंदा बन गया. You have a sort of this semicircle over here. Let me choose the green color. ठीक है. Let's say if you want to measure the internal diameter, which is basically this, right? D1. So you can fit the hollow ball like this, ठीक है. And you can measure the diameter, कि इसका internal diameter कितना है, ठीक है. That is the purpose of external jaws. I hope it makes sense, ठीक है. Any questions in external jaws? Give me a thumbs up in your reactions if it is clear. Okay, हमजा को क्लियर है, मशाल को क्लियर है या नहीं? So, does the external jaws move? Can you repeat your comment? I lost you midway. Does the external jaws what? Uh, does the external jaws move? That means how can we take the readings? Yeah, From the basically main आपके scale पास or from the yeah. vernier scale? You have a hollow ball, ठीक है. आपने उसको एक्सटर्नल जॉस को ऐसे अंदर से फिट करना है फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द बॉल. यू कैन फाइंड कि इंटरनल डायमीटर कितना है बॉल का, राइट. कैन जस्ट फिक्स द इंस्ट्रूमेंट. अगेन इट कैन स्लाइड, लाइक इफ यू कैन मूव द वर्नियर स्केल, वो एक्सटेंड होते रहेंगे, ठीक है. यू कैन मेजर के आपके लेट्स से योर बॉल का स्ट्रक्चर लाइक अ स्फीयर, यू कैन फिक्स इट लाइक दिस इन बिटवीन, एंड यू कैन मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट. डज दैट मेक सेंस? Yes, sir. Thank you. And the internal jaws, as you can see, it can measure the exterior, ठीक है, diameter of any instrument. It can measure, can fit it like this, ठीक है. You can see how it is, how it has been fitted, ठीक है. आपने देखा की कैसे फिट हुई है. It just finds the length, or let's say the external diameter of the ball, ठीक है. So if I just write it down over here, internal jaws, the purpose क्या होता है? So they are basically used for measuring external. डोंट कंफ्यूज विद द नेम्स, ठीक है. इंटरनल का मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब इंटरनल, ठीक है. सो एक्सटर्नल मतलब थोड़े बेसिकली एट द टॉप, राइट. इट्स जस्ट द नेम कन्वेंशन. हाउ कैन जस्ट नेम इट टॉप जॉस, बॉटम जॉस, व्हाटएवर सूट्स यू. सो conventionally book wise is basically named like this, ठीक है. I hope it makes sense. Used for measuring external diameter of spheres or objects, ठीक है. Okay, so again place, let's say आपके पास टेनिस बॉल है, कि ना कट, you don't want to cut the tennis ball, just want के overall tennis ball का diameter कितना है. You can directly place the tennis ball like this, ठीक है. Directly place the tennis ball like this and just measure कि इसका diameter कितना है using this instrument, and it would be it would give the readings in millimeters, ठीक है. Or if you can convert it to centimeters depending upon the scaling जो आपको दी हुई है. So it's just for finding external diameter of this, of the basically object, right? Any questions? I hope it is clear, ठीक है. So ये मैं रख कर रहा हूँ just to keep it clear. सर आप डेफिनेशंस दिखा देंगे, मैं कॉपी कर लूँ. हाँ श्योर, ठीक है. And then you have ratchet over here. Ratchet जो टॉप पे स्क्रू होता है, ठीक है.
It's just used for tightening the vernier scale in order to avoid movements while taking measurements, right? ताकि आपको scale आगे पीछे ना हो when you're taking the measurements. So what do? You have the scale. Let's say this is the object over here. इसको मैंने fix किया, मैंने vernier scale को tight किया, मैंने ऊपर से screw tight कर दिया, right? And now I can remove the object. Now I have the vernier scale fixed, which is not moving up, left, and right. I have the main scale fixed. I can now just take the reading, ठीक है कि reading क्या बन रही है, and just dictate and write it down, right? तो व्हाट आई वाज सेइंग इज लेट्स से आपने यहाँ तक इसका साइज लिया की का एंड आपने स्क्रू को रेचल को आपने टाइट कर दिया. Now you can remove the key and it won't move either left and right. The one is scale is fixed. Now you can take the readings. You will learn how to take readings in a while. Then उसके अंदर load it down के आपकी reading particular इसका length diameter जो भी है इसका इतना होता है. I hope it makes sense. ठीक है. तो फॉर कन्वेंशन लेट्स नेम इट लाइक दिस. लेट्स कीप इट सिंपल. लेट मी नेम इट इंटरनल ताकि आपको याद में मसला ना हो. ठीक है. यूज एनी कन्वेंशन. लेट मी जस्ट नेम इट इंटरनल जॉस ताकि आपको कंफ्यूज ना हो जाए. लेट मी नेम इट एक्सटर्नल जॉस, right? Just a convention whichever you want to use, but you should know okay what is it doing, right? यहाँ पे भी मैं इसको टेबल को चेंज कर देता हूँ ताकि you are not getting confused in the future. Internal jobs. सर ये रेचेट की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? Ratchet spelling is RATCHET. So what am I writing? नो डेफिनेशन. Definition ये है कि it's used for tightening the vernier scale in order to avoid movements while taking measurements. ठीक है. लेट्स से आपने डायमीटर अपने की को फिक्स कर दिया ओवर हियर, देन आपने रेचेट स्क्रू को टाइट कर दिया एंड देन यू कैन रिमूव द की and the scales won't be moving left and right. It would be fixed. Now you can take the readings easily. And now you cannot keep the object together in the vernier scale. How would you be able to take the reading, right? So you can just fix the instrument. ठीक है. उसका size fix करें, जैसे को screw को tight करें मट के, then you can remove the object. You can take the readings easily, right? That is the purpose of bracket. Does that make sense? यस. ठीक. And then you have the main scale and the vernier scale. Main scale and the vernier scale. ठीक है. So main scale is the scale सर which एक is सेकंड वो क्या कहते हैं रेचेट की डेफिनेशन दिखाने से एक सेकंड. Hamza, can you speak for loudly? रेचेट की डेफिनेशन दिखाते हैं एक सेकंड के लिए बस. अच्छा देख लें. बता दें या फिर दिखा दें? बस दिखाना था. अब आप कर लें आगे. ठीक है. So this is a scale which is fixed. It cannot move, right? And that is I guess that is it. We know it is millimeters. And vernier scale is the movable scale. ठीक है. Which can slide over the main scale, right? Which can slide over the main scale. ठीक है. अब हो क्या रहा है? If you can see this is the main scale. ये आपकी जो internal rod है, that is fixed. It cannot move. Vernier scale is the movable scale. You can move it left, you can move it right, depending upon कहाँ पे आपका जो instrument है, ball है और key है, कहाँ पे जाके वो fix हो रहा है. ठीक है. So this is the two types of scales over here, and they both are marked in millimeters. ठीक है. So let's now learn how to read the reading, right? हमें पता है कि वर्नियर स्केल के अंदर ये पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट क्या करता है, ये पार्ट क्या करता है, हमें पता है, राइट? नाउ लेट्स लर्न हाउ टू टेक मेजरमेंट्स यूजिंग अ वर्नियर स्केल. So let's go on to that slide.
सो नाउ इसके लिए मैंने एक लिंक भी डाली हुई है बॉटम पे, विच इज प्रीटी यूजफुल एंड इट डिक्टेट्स एवरीथिंग इन डिटेल कि हम कैसे मेजरमेंट्स लेते हैं. सो यू कैन जस्ट क्लिक दिस. मैं आपको जब स्लाइड भेजूंगा, यू कैन जस्ट ओपन दिस एंड रीड दिस डॉक्यूमेंट. दिस इज प्रीटी मच इन डिटेल ओवर हियर. सो इट ऑल्सो एक्सप्लेन ऑल द पार्ट्स. ठीक है, सो मैं आपको ये दिखाता हूँ. सो व्हाई इफ वी हैव सम गुड रिसोर्सेज आई विल बी शेयरिंग दो विद यू. ठीक है. So jaws for measuring inner dimensions, jaws for measuring external dimension, outer dimensions, vernier scale, main scale. ठीक है. Screw clamp we call it ratchet, एक ही बात है. And इसकी accuracy लोगों ने बताई है ये. ठीक है. अच्छा जी. So let me just now copy this part over here. ठीक है. ये थोड़ा important part है. ये देख लेते हैं ये क्या है. These are the definitions of the vernier scale and the main scale. राइट. अगर आपको ये क्लियर हो गई तो एवरीथिंग इज गुड. ठीक है. या मैंने लिखी ही नहीं लिखी. इसको अभी होगी. ओके. सो व्हाट इज द मेन स्केल. अब आपकी जो लेट से रीडिंग जो आ रही है मेन स्केल की, इट विल गिव यू आंसर इन 2 डेसिमल प्लेसेस, राइट. दैट विल बी 2.1 सेंटीमीटर. ठीक है. और लेट से इट इज 2 इज द फर्स्ट डेसिमल होल नंबर ओवर हियर एंड 0.1 इज द वन डेसिमल प्लेस, राइट. जब आपका वर्नियर स्केल होगा, दैट विल गिव यू द आंसर, the basically value for the second decimal place answer. Because your overall answer would be what? So let's say your answer of the reading would be 2.1 plus 0.03. So it would be basically 2.13 centimeter. So these two values would be arriving from what? From your mean scale reading. And this second decimal place would be coming from your vernier scale reading. Okay, VS, vernier scale reading, VSR, vernier scale reading. So what is VSR? It's basically vernier. अगर भूल ही जाए बाद में, वर्नियर स्केल रीडिंग. अच्छा, अभी कैसे लेते हैं रीडिंग वो देख लेते हैं बैठ के. सो अब दिस इज द वर्नियर स्केल. ठीक है. दिस इज द वर्नियर स्केल जो विच कैन मूव. ठीक है. दिस इज द वर्नियर स्केल ओवर हियर एंड दिस इज योर मेन स्केल. ठीक है. अब जो आपकी ओवरऑल रीडिंग आती है फॉर द फाइनल आंसर, दैट इज एज विद द फॉलोइंग फॉर्मूला. So your reading for your final answer is your mean scale reading plus vernier scale VSR, vernier scale reading, right? So this is your overall formula for getting your answer. ठीक है. अब वो कैसे करते हैं ये अब मैं लिखा हुआ है कि obtain reading is equals to mean scale reading plus vernier scale reading. Okay. So अब how do we measure it out? तो ये लिख लें बैठ के. Let's imagine you have this following condition over here. ठीक है. आपके पास ये रीडिंग की कंडीशन बनी है, आपने इंस्ट्रूमेंट फिक्स किया, आपने इसको टाइट कर दिया, देन दिस इज द बेसिकली setup which is appearing on your vernier scale जो आप देख रहे हैं. This is the bottom one is called the vernier scale and the top one is called the mean scale. अच्छा, how would you decide कि what is your mean scale reading? अब ये गौर से सुने. So your mean scale reading is the value. अच्छा, this is the zero of the vernier scale, right? This is the zero of the vernier scale, VS. So what is your mean scale reading? It is the reading which is before on your left of your zero of your vernier scale, right? So what do you see on your left of your vernier scale? It's 10 centimeter, right? तो यहाँ पे पॉइंट नहीं आ रहा. If you see कि यहाँ ये 10 से 11 जा रहा है, so it's 10.1. ठीक है. It's यहाँ पे this is 10.1, this is 10.2, this is 10.3, this is 10.5 and so on, right? So यहाँ पे you just directly see 10.0. So your main scale reading is currently what? 10.0 centimeter, right? Up, how do you choose? How do you choose your? So you want to have two reading. The main scale reading. The second one is vernier scale reading, right? And how do you decide your vernier scale reading? Vernier scale reading. अब you want to be vigilant over here, right? अब आपको देखना है कि कौन. अच्छा, you want to basically find out कि एक तो bottom पे ये है vernier scale, top पे ये है main scale, right? So you want to find a point जहाँ पे
इन दोनों की पॉइंट की अलाइनमेंट हो, राइट? सो वेयर डू यू सी के, यू कैन सी के ये पॉइंट बेसिकली सेम अलाइन हो रही है दोनों लाइन, ठीक है? द पॉइंट एट विच द वर्नियर स्केल line, but the vernier scale leading and the main scale leading are getting aligned is your vernier scale leading, ठीक है? ये दोनों लाइनें ऑलमोस्ट ओवरलैप कर रही हैं, राइट? ठीक है, समझ आया मशाल हमजा? So this is basically what this is 0 till 10 over here. So this gives you second decimal place. So this will be basically 0.02. So your vernier scale reading is 0.02 centimeter. Does that make sense? ठीक है. So your final reading क्या होगी आपके पास? आपकी final reading होगी, you will add both the measurements into the formula. So your obtained reading is going to be what? Your obtained reading is going to be 10.0, which was the mean scale reading. ठीक है, ये आपके उसके पास क्या आएगा? यू गेट द होल नंबर प्लस वन डेसिमल प्लेस नंबर, ठीक है? 10.0 है हमारे पास, प्लस व्हाट इज द वर्नियर स्केल रीडिंग? जो भी रीडिंग आएगी आपकी 0 से 10 तक, यू डिवाइड इट बाय 100 बिकॉज इट्स बेसिकली 100th ऑफ अ स्केल. जस्ट इमेजिन इट्स जस्ट द सेकंड डेसिमल प्लेस. तो जो भी आपका आंसर आएगा गोइंग टू बी 0.0 समथिंग, राइट? So it's going to be 0.02 over here. So your answer is over here क्या है? 10.02 centimeter. This is your actual सर answer. The instrument reading. ये समझा? सर मेन स्केल की जो रीडिंग है वो हम ऐसे निकालेंगे, वर्नियर स्केल का जो जीरो उससे बिल्कुल लेफ्ट पे सबसे पहली लाइन है वो उसकी मेन स्केल की रीडिंग होगी। यस यस. तो मेन स्केल की रीडिंग वही है जो आपके पास जीरो होता है वर्नियर स्केल, जो लेफ्ट पे आपकी जो लाइन आ रही होगी मेन स्केल की, दैट वुड बी आंसर. तो ऑन योर लेफ्ट व्हाट डू यू सी? डायरेक्टली सी 10 डायरेक्टली, ठीक है? क्योंकि 10.1 भी नहीं है, 10.2 भी नहीं है, तो इट्स 10.0 सेंटीमीटर, ठीक है? अगर 10.1 होता लेफ्ट पे तो फिर वो हाँ, तो it would be 10.1. 10.1। Let's say if you are seeing this particular line on your left of the zero, this would be 10.1. ठीक है? सही है, सो समझ आ गया। फॉर वर्नियर स्केल यू सी के कहाँ पे दोनों स्केल की लाइन अलाइन हो रही है, तो उस पे लेट से ये 2 पे हो रही है ना, तो यू विल जस्ट डिवाइड 2 by 100. तो जो आपका स्केल होता है वर्नियर स्केल, इट्स 100 ऑफ योर मेन स्केल. So just imagine it's the second decimal place of your answer. So it's 0.02. You will add these both answer over here to get the final reading. Does that make sense? Mashal and thumbs up. यस Give me a thumbs up. Yes, sir. Okay, ठीक है, चलें गुड. हम ये बोल दिया बहुत. Now we have the micrometer screw gauge. ठीक है, इसके भी we have some constructing parts over here, and इसकी we have the readings, right? So how much time will we have in the meeting? We have 3 minutes. We can discuss its constructing parts. इसके बाद when you will rejoin for the next 20 minutes, we can discuss the remaining topics, right? अब ये दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एमसीक्यूज में आपके आता है ना, आपको स्केल के मंडेस के बना के दे देंगे, बोलेंगे व्हाट इज रीडिंग व्हिच इज शोन इन द एग्जाम एंड द स्कीमेटिक. यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कैसे निकालते हैं. वी विल डू सम एमसीक्यूज तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा चल द पास. So now we have the second micrometer, the second basically instrument which is used for measuring pretty small readings. इसकी accuracy क्या होती है? इसकी accuracy, it is more accurate than the micrometer screw gauge. Oh sorry, Vernier calipers. इसकी accuracy is 0.01 millimeter. Right? It's more accurate than the Vernier scale. It can measure more small readings than the Vernier scale. ठीक है? Vernier calipers. So इसके we have some constructing parts. ठीक है? यहाँ पे इसका ratchet भी होता है, but किस छोटा सा we have a ratchet over here. इसके हम पूरे parts देख लेते हैं बैठ के, then we will learn how to basically take measurements of micrometer screw gauge. So let me just name this part. लिखा हुआ भी है ये वाले parts, so explain it more in the next empty slide. ठीक है जी. सो व्हाट डू वी हैव ओवर हियर? वी हैव द जॉज ओवर हियर, ठीक है? एंड इसको हम शाफ्ट बोल रहे हैं, इसको वी कॉल इट बेसिकली मेन स्केल. ठीक है, ये वहाँ का मेन स्केल, मंडे कैलिपर की मेन स्केल होता है, यहाँ का मेन स्केल ये है. ठीक है, दिस इज द सर्कुलर स्केल, ठीक है, विच कैन रोटेट. लोगों को टर्म बोला हुआ है, तो आई वांट टू बी स्पेसिफिक अबाउट द टर्म्स बिकॉज ताकि आपको कुछ क्लियर हो. दिस इज कॉल्ड सर्कुलर स्केल, ठीक है?
एंड दिस इज बेसिकली अगेन अ रैचेट। रैचेट क्यों इस्तेमाल होता है? जस्ट टू फिक्स द इंस्ट्रूमेंट, आगे स्केल्स आगे पीछे मूव ना करें, ठीक है। एंड व्हेन यू बेसिकली रोटेट दिस ना, व्हेन यू रोटेट द सर्कुलर स्केल, और आपने इस्तेमाल किया लैब के अंदर, इट गिव यू टिकिंग साउंड, टिक 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 टिक, सो व्हेन इट मूव्स सो इट गिव यू टिकिंग साउंड, राइट? सो हाउ वुड यू बेसिकली नो कि आपका इंस्ट्रूमेंट टाइट हो गया? व्हेन यू आर आल्सो मूविंग दिस रैचेट, ठीक है, सो यू कीप ऑन टाइटनिंग अंटिल यू हियर, ठीक है। सो it does not tighten it further ताकि खराब ना हो इंस्ट्रूमेंट, it just basically gives you a tick tick sound, ठीक है। तो it tells you कि बस अब बहुत टाइट हो चुका है, but it not tight further, ठीक है। So again इसके these are the jaws just to fix the instrument over here, ठीक है। So let's discuss every part in detail ताकि we can move on towards how to take measurements, ठीक है। So we have the jaws, ठीक है। सर What is the purpose of jaws? ये जो Yes, अच्छा एक मिनट। ये सर्कुलर स्केल है, इसकी स्पेलिंग यही है या फिर? यस सर। अच्छा हमजा, मुझे आप बताएं, आप कुछ पूछ रहे थे तो जोर से बोले, आवाज हल्की आ रही है। मैं कह रहा था कि ये जो सर्कुलर स्केल की स्पेलिंग है, ये सही है या फिर गलत लिखी हुई है? हाँ, स्पेलिंग देखो, फिजिक्स के अंदर ना स्पेलिंग की मिस्टेक चलती है, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक पे मार्क्स नहीं करते, यहाँ पे आपके मेथड्स, योर आंसर्स, योर कॉन्सेप्ट चेक होते हैं, राइट? सो आई माइट मेक मिस्टेक्स, थैंक यू फॉर दैट। So it's CIRCULAR. Thank you. So don't be scared about spelling mistakes in your physics exam. Just be sure that you deliver the concept correctly. So if you have written secular in your exam and I'm checking it out, I'll give you the marks. Okay? But again, obviously not so blunders कि आप solar लेके आ जाए बैठिए, ठीक है? Circle in place of circular, ठीक है? Thank you for that. So what is the purpose of jaws? Jaws are basically used for gripping the object, right? For gripping the object, ठीक है। And then we have what? Then we have Allah wala kare aapka, not this. We have the main scale, right? So again, it's the scale which is fixed. It gives you a reading in millimeters, ठीक है। The fixed scale, ठीक है, and it gives you a reading in millimeters, ठीक है। And then you have the circular scale, or लोगों ने इसको drum बोला हुआ, क्या बोला हुआ लोगों ने? Drum बोला हुआ है। Call it circular scale so that it makes sense, ठीक है। It can rotate, right, like this. It's called circular scale. It contains 50 divisions, right? Contains 50 divisions, and it can rotate around. It can rotate, right? Not move. Rotate like this. Rotate around the main scale. It rotates around the main scale. I want to be specific about my spelling mistakes. Someone is judging, right? अच्छा, okay. ठीक है. Then we have the ratchet over here. Ratchet क्या होता है भाई? Ratchet is again a simple tool used for tightening the object. ठीक है. Ratchet is used for tightening. Spelling mistake हो रही है वापस. For tightening the object in order to avoid movements while taking measurements, ठीक है। वही जो पर्पस था वर्नियर स्केल का, वही पर्पस यहाँ पर है, टेकिंग मेजरमेंट्स, ठीक है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और आई कैन वेट फॉर मिनट. Any questions about the constructing parts of the instrument? Hamza and Mashal. I think Mashal सो रही क्लास में. No, sir, not at all. ठीक है. हमजा क्लियर है? जी समझ आपकी आवाज नहीं है. जी Not hearing you till now. जी सर, क्लियर है। अच्छा आवाज आ रही है, ठीक है। उसने बोला सर क्लियर है सर, आगे बढ़े. ओके ठीक है, अंडरस्टैंडेबल.
So these are the constructing parts of the micrometer screw gauge which you should be aware of. अब let's learn how to take measurements of a micrometer screw gauge. एक एग्जांपल है यहाँ पे, हाँ ये एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल है. So इसको मैं थोड़ा आगे ले जाता हूँ ताकि it makes sense logically. We will discuss the first constructing parts and then how to take measurements. ठीक है. अब it's pretty simple to how to basically take measurements. Again यहाँ पे दो readings होंगी हमारे पास. Can anyone tell me कौन सी readings होंगी यहाँ पे? I told you that there are going to be two readings. So the final reading is going to be basically main scale reading, right? Main scale reading plus circular scale. ठीक है. So this is basically the reading of your reading formula of every instrument. तो आपको पहले इसकी reading निकालनी है from the main scale. ठीक है. Let me just label it again. It's called the main scale over here. And this is the Vernier scale, right? Which we are referring to. Oh, sorry, the circular scale. उससे Vernier Calipers हो गया. It's CIR, right? Circular scale. ठीक है. जा. अच्छा जी. इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं? हाउ डू वी टेक द मेन स्केल रीडिंग? इट्स प्रीटी सिंपल, राइट? सो आपके पास इफ यू सी दिस इंस्ट्रूमेंट, आपके पास दिख रहा है कि 0 से 1 तक ओनली हाफ ए पॉइंट, दैट इज गोइंग टू बी 0.5 मिलीमीटर, राइट? देन यू सी 0 से 1 देन 2. ठीक है. सो द रीडिंग व्हिच इज बेसिकली आपने क्लोज कर दिया सर्कुलर्स के, आपने रेचिट को टाइट कर दिया बैठ के, basically the line before the circulars key which you see is going to be your mean scale reading, right? The line on your left, basically let me call it a datum line. ठीक है. So the line, the reading, the basically the mark which you see on your left of the circular scale or this boundary, ठीक है, datum line is going to be a mean scale reading. Okay, so what is the mean scale reading at the moment? यहाँ पे this is showing this particular slide over here, this point mark over here is 2.5 millimeter. ठीक है. This is your mean scale reading over here. So आपके पास mean scale reading MSR is going to be basically be what? 2.5 millimeter. ठीक है. Which can be seen over here कि your mean scale reading is 2.5 millimeter. इन लोगों ने सेंटीमीटर कर दिया बैठ के. So don't be घबराना नहीं है बैठ के कैसे हो गया सेंटीमीटर में. So if you want to go from millimeter to centimeter, you can simply divide by 10, right? So अगर आपके पास 2.5 millimeter आ रहा है, so it's equivalent to basically 0.25 to 10, 0.25 centimeter. It's easy. And how do you basically check, how do you get the reading of the final scale? तो वो आपके पास होती है, मेन सर्कुलर की रीडिंग आपके पास होती है ये. तो क्या होता है? So ये अच्छा, let me just call this as a data line. This is the boundary. So data line is basically the horizontal line over here. So this is the data line. ठीक है. And जो रीडिंग बेसिकली डेटा लाइन से अलाइन हो रही है ना, you can see के this is 30, this is 31, this is 32, this is 33. ठीक है. So this line is aligning with the data line over here. So this is your circular scale reading. ठीक है. तो CSR, circular scale reading is going to be 33. ठीक है. So अब 33 what? ठीक है. आपके पास you would have to basically divide by 10 over here. ठीक है. Because ये scale down हुआ है. ठीक है. We have to basically divide by 100 division. So it has, ये दिखा दूंगा आपको. So you have to multiply with this particular factor over here, right? So 1/100th of 1 millimeter. ठीक है. तो उसकी स्केलिंग ऐसे हुई है कि every basically value of the circular scale is 1/100th of a millimeter. We have to multiply this with 100. ठीक है. So just imagine जो भी इसकी रीडिंग आएगी आपकी is going to be in this form 0.33 millimeter. ठीक है. So this is basically the conversion method of getting circular scale reading into millimeters. ठीक है. ये सेंटीमीटर में है, that is why लोगों ने extra 0 ऐड किया हुआ यहाँ पे. ठीक है. समझ आ रहा है? So अगर आपके पास 0.33 millimeter है, so if you further divide by 10, you're going to get 0.033 centimeters. ठीक है.
If we add these two things together, we'll get the same answer over here, which is 0.283. So अभी मैं आंसर निकाल रहा हूँ millimeter. So don't be confused about that. So let's get the final rating. ठीक है. So what is the final rating? Coming out to be. So it's going to be 0.3 2.5 millimeter. जब यहाँ पे आ चुकी. So it's going to be 2.5 plus 0.33. So it's going to be basically 2.83 millimeter. ठीक है. If you want to convert this into centimeter, just divide by 10, so you get the same answer, which is 0.283. ठीक है. That's how you get out. That's how you basically get the mean scale rating, the separate scale rating of the micrometer screw gauge, and that's how you end up getting final scale rating. Any questions in this part? सर ये जो डेटम लाइन है, डेटम लाइन, इसके ये एग्जाम में हमें याद करनी है एग्जाम के लिए या ऐसी है बस? ये आप पूछ रहे हैं कि आपने याद करना है कि डेटा लाइन बोलते हैं इसको, ये पूछ रहे हैं आप? जी हाँ, आप याद कर लें जस्ट फॉर योर रिमेम्बरेंस के हाउ डू यू, अगर यू कैन इफ यू कैन नेम इट समथिंग एल्स तो कोई बात नहीं. ऑफिशियली इट्स कॉल्ड द डेटम लाइन, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड दिस बाउंड्री डेटम लाइन इज बेसिकली द लाइन विच इज ऑन द मेन स्केल, राइट? तो बाउंड्री को मैं बोल रहा था बैठ के, सो इट वाज जस्ट सॉर्ट ऑफ जस्ट डिफाइनिंग द बाउंड्री बिटवीन द मेन स्केल एंड द वर्नियर स्केल. So I was just calling this datum line horizontal y that this is the formal definition which you will see in your books. Yes, I was scale the reading is the reading which align with the basically with the data line. ठीक है. तो DATUMA N नहीं है, ये मैंने स्पेलिंग थोड़ी राइटिंग भी खराब है. तो आई एम इंजीनियर बाय प्रोफेशन बट अ डॉक्टर बाय राइटिंग. डॉक्टर की राइटिंग अच्छी नहीं होती. सो या engineers की राइटिंग इज प्रीटी गुड usually, but not mine. I have a professor who taught me mathematical course. His writing was flawless, perfect. Okay. He did some joining, italic writing. So he used to teach me mathematics, some calculus course. Okay. So I will show you inshallah in one of my classes. Writing. तो ये पार्ट क्लियर है कि मैं थम्स अप इफ इट इज क्लियर कि इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, हाउ टू बी टेक द रीडिंग एंड डेटा लाइन आपको याद करनी है. यस, गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर और नो तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस. ठीक है, गुड है.